टॉपिक क्रिएट कर दिया हम लोग का, तो चालू कर दो। हाँ। और माइक पूछेगा तो देखते हैं, पूछेगा तो वैसे भी फ्राइडे इवनिंग है तो वो ज्यादा ये नहीं, लोड नहीं लेगा। वो दूसरा हेडेक, इंडिया मैच चालू करने का कि नहीं चालू करने का मुझे पता नहीं। हाँ, क्योंकि बारिश हो रही है। अरे उसका ना कभी कभी अजीब है, वो बोलेगा ये सारी चीजें ना नॉन इंडिया मैचेस के लिए रखो। तो अगर कल लंका प्रीमियर लीग चालू नहीं हो रहा तो वो चालू मत करो, बट इंडिया मैच चालू करके रखो। इसको मुझे एडिट करना है, देखो ना ये एक ही आया है। अच्छा, यू एडिट इट।
Now on air with the Crickong commentary team. Hello and a warm welcome. This is ECS, the match that we are covering, and it is ECS Germany Dresden. Match number 23, which will be played between FC Victoria 89 and Berlin CC. The news from out in the middle is that the Berlin Victoria 89 FC have won the toss and elected to field first, primarily because they feel that chasing would be better to go on this particular surface. A full toss to begin with could be a no ball, waiting for the umpire's decision. It is just a single, but we are waiting to see whether it is a no ball. Yes, it is a no ball, has been signaled by the umpire. So as the tradition is, we'll go with the batting team first. Berlin CC, Sagar Kataria, Neeraj Patwari, Jatinder Vashisht, Sahil Lal, Ehsan Aditya, Awais Zafar, who is the captain, Muhammad Hassan, Saddam Gill, or Saddam Gill, Karan Singh, Imran Bukhari, and Abhilash Anantaram. This is a pair of Karthik and Shaurya to take you through this day. We have the ECS right now, and then the big one. Is it going to be India versus Ireland, or is it going to be Bumrah versus Ireland? That will be the main topic. And also, is it going to be Bumrah versus Ireland, or is it going to be Bumrah versus rain? Because there is a lot of rain forecast. As far as the points table is concerned, Berlin find themselves at number 7 out of 11 with 1 win in 3 matches so far, while FC Victoria 89 are, well, we are searching where they are. Oh, they're at number 10 because their initials are. But both of them have played the same amount of matches, have lost the same amount of matches, have the same number of points, but there is a massive difference in the net run rate. Shara, if you could take us to through the playing 11 of FC Victoria playing 11. Yes, the FC Victoria 89's playing 11 is Zameen Haider, Kumar Lakshman Das, Walid Aslam, Zishan Sahi, the captain, Bilal Hussain, Haider Ali, Hassan Abbas, Shahid Ali, Usman Arif, Zafar Muhammad, and Ihsan Latif. So that is the matchup between both the teams. And the first ball was given a no ball. After that, the ball has been hit towards the boundaries for a 4. So 6 runs are on the board of the first delivery technically, as a single was taken on that wide. And the bowler is Ihsan Latif, and the batters to the 2 openers for the Berlin team are Sagar Kataria and Neeraj Patwari, who are starting in Neeraj, it is with a boundary to start, and it is Sagar Kataria who is now on strike. The Victoria team have decided to field, so they have a strategy of chasing here, and at this point
with the position in which they are in the points table, I think they must be having a tactic and a belief, because a victory in this point in this at this stage of time is really important, and that would be the plan of action for both the teams, rather, because both the teams are not super well on the points table. One is on the 10th, as I said, and one is on the 7th position. So both the teams would be needing that push towards the top as we are moving towards the whole meaty section or the juicy section of this tournament, which is the middle part of this tournament. And now that the teams have decided, the synergies and the strategies have built between all the team players, the teams, and now everyone has judged every other team and how which player is going to perform well, which player is going to not. The time has now arrived to make their strategies quite so well. This time, a good shot towards the covers region, but the fielder even better fielding prowesses to stop that run. And if it would have gone clearing the field, it would have been given a boundary, but not a boundary. It is just a dot ball in the end. We are in the Dresden city of Germany. Germany, mostly known for its footballing history. A lot of big players, Thomas Muller and a lot of other players have been come on from this country. We hope that cricket has that same value, and a brilliant shot by Patwari towards the extra covers. He just lofted that ball, and that has cleared the boundaries quite so well and cleared the ropes as well. First 6 of this match. It is 8 runs. It would be 14 runs on the board, and now Patwari has started to strike here. This early on momentum is needed for the bowling team, as once they start off well, once they get the room and the rhythm of batting, both the batters, Sagar Kataria and Neeraj Patwari, it would be a big total which they would be planning to put up on board, and that would be plan of the bowling team. As we have seen in the earlier games which they have played, they had a good start, but they couldn't keep up on that, and it would be required for them to continue this momentum quite so well. This time, another time, a good fielding prowess towards the long on region to save a boundary. That will be end of the over. It is 15 for no wickets lost after the first over. Ads कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर. एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? Welcome back. 15 for no loss after 1 over. Make that 19 for no loss after 1.1 overs, because Patwari has pounced on the short ball and pulled it away through deep square leg for a boundary. And talking about this particular unit, that's FC Victoria. I saw one of their matches. They had played against the other Berlin team. I think it is ICA Berlin. They conceded 176 in 10 overs and themselves scored only 83. So they would hope that this particular Berlin is different from that particular Berlin team. But for now, everything is going on song for them. And now, well, there's a top edge, and lucky for the batter, it has gone behind the keeper, and it has just landed in front of the ropes and almost. And did he collide with the bowler? He did not collide. He just fell while running. He just fell in the middle while running, and I hope he hasn't hurt himself. And if the ball would have been inside the crease, he would have definitely lost his wicket due to a run out here, because he was not able to get up. I think it was because of the carpet that he fell, and I hope that he is quite so well. But nevertheless, he would be happy with that boundary here. The next ball by Kumar Lakshman Das has also been struck, this time with a great timing towards the covers region. With the ball, with the pace of the ball has the delivery has been struck
quite so nicely, and it would be a very, very good shot, a sixer rather this time, to add up here. Yes, 4-6-4, 14 runs in the last 3 deliveries. And if you take it a little bit behind, then it's 21 runs of the last 5 deliveries. Next ball coming up now. On the pads, is this going to be 6 more? You bet! On the pads, and Neeraj Patwari is just taking the Berlin attack, Victoria attack to the cleaners here. 4-6, 4-6. 20 runs have come from this over alone, and we still have 2 deliveries left in this over, and 2 balls prior to this he had scored a 6 as well. He has scored 32 out of the 35 runs that have been scored by the team. Sagar Kataria has made a guest appearance. He's batting on 2, while the Victoria team have been kind enough to give 1 extra. Otherwise, it has been the Patwari show all through for these first 10 deliveries that we have witnessed in this match number 23. There comes a slower delivery outside the off stump. Patwari looked to drive it through the offside, but was comprehensively beaten. And Lakshman Das is shaking his head. And one expects why is he shaking his head. One understands as well, because it has not been the best bowling effort. 2 balls were on the pads and both were dispatched over deep square leg. 1 good ball. That is 1 good ball. The second ball, which actually came in quick onto the batter, the short ball, but that went off the top edge behind for a 6, and then a wide ball outside the off stump, which was dispatched for a boundary. Final delivery outside the off stump, swung away wide of mid wicket, and that will be another boundary. 24 runs of the over, 2 gone. Well, Berlin CC, after being asked to bat first, are rocketing along to 39 for no loss, out of which Neeraj Patwari has scored 36 in 11 balls. Ads कितने annoying होते हैं ना, but do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये It's now 39 on the board. It is just 2 overs done. So quite a brilliant start here for the Berlin CC, and they are just continuing that flow of runs, the momentum of runs. It is now Sagar Kataria who starts off this over with a brilliant 4. He just cuts the ball towards the deep point region for a boundary. 43 now on the total, and both the batters are looking in a fine form. It is Neeraj Patwari, 36 of 11, just 11, and now Sagar Kataria is joining the party. 6 of 10 it was, and we'll have to check if it is a 6er or a 4, but a lot of runs would be added to that. A bouncer of a delivery, and it was pulled away towards the deep fine for a boundary. And yes, it has been given as a 4. So back-to-back 4s for Sagar Kataria here. He is also continuing, or he is playing the reflection of his batting partner, and sides change for the bowler Hassan Abbas. Now he is trying a different route here, because he has been struck with quite a lot of boundaries on the first 2 deliveries. This time a better ball outside the off stump had the pace, and it was a bit fuller, so it was Sagar Kataria who couldn't guess the timing of it, and it would be a dot in a lot of 4s and 6s, which we are seeing right now. 47 runs are on the board here, and it will be now Sagar Kataria would be wanting to continue what has been started. Yes, he wanted to continue. He went for that lofted shot and didn't time it completely, but the ball ended into the no man's land, and it would be just a single here. 48 now on the board for the bowling team. Yes, for the batting team. Oh, sorry. I'm so sorry. I think I have to go to the ENT specialist, because I actually heard Shaurya saying 48 for the bowling team. And it took me a while to realize, okay, he didn't say bowling team, he said bowling team. Okay. Well, if this is my state of hearing sitting,
what is this, 1 centimeter or 1 meter beside the person, then I definitely need to go to the ENT specialist at least to check my right ear. But meanwhile, comedy of errors out there. It was worked away towards short mid wicket by Neeraj Patwari, and then the batters went for that single. The fielder came in, dived, and underarmed it at the striker's end, but he hit Neeraj Patwari instead, right on the rib cage. And well, he didn't react, to be honest. In fact, he ran, and now he's clutching his rib, so he must be feeling the pain now. He ran all the way to the 30-yard circle and returned the ball as well to the bowler. And now some disturbance. Well, some disturbance because Hassan Abbas was charging in to bowl the final delivery of the third over, but Sagar Kataria said someone moved from that mid-on, long-on region, and Abbas is not convinced. He turned back, and then the batter said, no, I saw that particular guy moving. Said, okay, well, I have to reload. Now, final delivery from right arm round the wicket to Sagar Kataria. It's a short ball, pulled wide of short mid wicket. Will this find the boundary? It does. No one at the bound, no one at the deep, and well, a better over for FC Victoria 89, but still 14 runs coming off it, 3 of them in boundaries, or 12 of them in boundaries. 3 gone. FC Berlin CC are going like a runaway train, 53 for no loss after 3 overs, but there seems to be a confusion. Has the over ended? We believe that the over has ended, and yes, eventually it has, as now we wait for the 4th over to begin. Ads कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर. एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त. यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11. क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिकॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी. तो देर किस बात? And now, the start of the 4th over, the scores on board are 54, as the first ball of this over has been taken as a single, and the bowler to arrive is Zishan Sahi. And if we talk about the bowling team, the Victoria 89 bowling, a big history, a newer cricket team I would say, but a big history in football, one of the oldest footballing teams. If we talk a bit about their history, it was an amalgamation of 2 big footballing teams in the German world. It was BFC Victoria and Lichfielder FC, and after that they build up that team, and now currently the Victoria team is playing in the 3rd Liga, which is the 3rd division of football, but a lot of history. And we hope that in cricket also they get those I would say the big thing. I mean, cricket gets in general a lot of fan following in Germany, and then we see bigger teams like Bayern and Schalke and Dortmund coming in cricket as Victoria has arrived. So that would be a great boost for cricket, as we see on in Spain and in India as well. Like a lot of footballing clubs also have cricket clubs, like Mohan Bagan has their own cricket club, East Bengal has their own cricket club, and in Spain I was talking about Real Madrid and Barcelona have a basketball club. Yes, cricket is not so big there, but basketball is their second biggest sport. So we really hope that that turn is taken for cricket here in Germany, and we see that like Victoria, like Berlin CC, as Berlin CC also has a cricket club, a football club, so they do a similar kind of thing, and cricket gets a lot of boost this time. A catch dropped towards the short fine leg region, and this is not required for the Victoria's team. They are currently lacking a bit behind with the bowling.
They have not gotten a wicket. A breakthrough is really, really important for them. The scores are 58 now. We're moving to the end of the fourth over. Just 2 balls remaining, and the bowlers should be eyeing on a wicket as the partnership has moved towards 58. A 50 runs partnership has arrived for the both the openers, and this is what something I was saying, that normally Berlin CC has not been capable to build on the partnership, build on the start which they have, and they would be eyeing to do that, as the projected score currently is at 156 with the current run rate of 15.13, and that would be a great boost to their points table. And on the other hand, now Victoria's team would have to pack up their bowlers, will have to pack up their fielding, and get themselves together, as they really at this point require that one odd wicket. And we move to the end of the over, it seems. Yes, it will be the end of the over. This 4 overs gone. It is 59 for no wickets lost. Well, Shaurya, you did mention about the Real Madrids, the La Ligas, and even the German Bundesligas. Do you see this? I'll put the other question first. What, in your opinion, should the Cricket Governing Council do to try and have cricket grow the same stature as football? Of course, it's not going to be a replica model for sure. It can't be, but at least somewhat, at least 1/10th, 1/20th, or 1/5th of it, if possible. What are the steps that need to be done? And do you see cricket reaching that stage? Maybe not now, but maybe in a decade, maybe 15 years. Because 10 years back, I don't think India had so many football fans. There were football fans primarily in Kerala, Goa, and to some extent Northeast. Yeah, the entire Northeast section. But now we are actually, if people have toured India, you will find football even in the remotest of places, because it's a very popular sport, and it's played almost throughout the world. So if you could answer those two questions. I mean, I'm as a sports fan, I would say that following the football model wouldn't be the right thing, as football is a different sport, the tactics are different, but at the same time, using the name of football or using the big names, like if we see at Victoria, before that, a brilliant shot is struck by Sagar Kataria towards the cow corners region, and he is looking in a brilliant form, in a very good form. 60 runs on board, and now Sagar Kataria is on 18 and Neeraj Patwari on 38. So, Sagar Kataria is on 24 and Neeraj Kataria is on 38. So, brilliant batting by both the batters. And yes, coming back to the question, I genuinely feel that we can use the big footballing names in countries which are like Europe. Europe has a lot of value for football. If we say, for example, a match between Real Madrid and Barcelona is played, may it be basketball, may it be football, the footballing media covers that match, because it is a big event, and it is a basketball match, but it is Real Madrid versus Barcelona. If we see a Real Madrid versus Barcelona cricket team, cricket would get that coverage. And that would be really great, getting the football clubs to play cricket. As I gave the example of Victoria's team and Berlin's team, they both are originally a footballing team, but they are playing this ECS tournament to promote the sport. And on the other end, we see Mohun Bagan and East Bengal, both big footballing clubs in Kolkata, where football is a big thing, but they also play cricket. They have a lot of cricketers, and there was a time when players like Saurav Ganguly and all used to help them build that team. So it is all about the names, big names coming to cricket, and once that is done, we can see the cricket being played as much as football is done in Europe as well. Yeah, that's hopefully cricket gets that much exposure in the European countries, and that's why this ECS series is very important, not only for them, for the folks out there, but even for other folks who follow this sport across the globe. Meanwhile, a full toss opportunity missed by Neeraj Patwari, who seemed to have slowed down a little bit, because when he was in the second and third over, he was going like a runaway train. But the last 2 overs, there has been a little bit of a pause in his approach. He's now moved on to 42
from 16. That's 43 from 17. It's still fast by any T10 standards. But in T10, what happens is one good over, which goes under 15 or under 10, kind of puts pressure on the batting side. And I'll tell you why. 3 overs, they were 53 for no loss. That means in the last 11 balls, they have scored only 19 runs. So your projected score was 170 at one stage. Even say at 10 runs and over. Oops, directed would have had Sagar Kataria out. But now, to get to 177, you have to score at 20 runs per over. That's not easy to carry on. Yes, you may get 20 runs for 1 over, 2 overs, but to do that continuously for 5 overs, it is a little bit of difficult. So now the projected score maybe has come down to 140 or even 150. 5 overs gone, 73 for no loss are the Berlin CC after being asked to bat first. Ads कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर. एनीवेज, continue to enjoy what you will. जीशान सही आए हैं वापस गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन कुछ सही नहीं घटा है उनके लिए. पहले गेंद पर छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उसे पुल कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए. और सागर कटारिया अब ये सूचना देते हुए कि सब कुछ नीरज पटवारी ही नहीं करेंगे. इनफैक्ट एक टाइम था जब नीरज पटवारी 32 पे थे और सागर कटारिया 2 रन पे थे. अब सागर कटारिया 32 पे आ गए हैं और नीरज पटवारी ने सिर्फ 11 रन ही जोड़े हैं. उसके बाद 43 पर खेल रहे हैं. फुल टॉस आगे आकर उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ. 1 ही रन मिलना चाहिए था, लेकिन मिलेंगे 4. ये अच्छा ऑफर है, खरीदो 1 मिलेंगे 4. ये नॉर्मली 1 के साथ 1 फ्री होता है, यहाँ पर 1 के साथ 3 फ्री हो गया और 4 रन, मुफ्त के 4 रन यहाँ पर बर्लिन सीसी के लिए. तो 2 गेंदों में 10 रन हो गए यहाँ पर. स्कोर अब बढ़ता हुआ 83 बिना किसी विकेट के नुकसान के. सागर कटारिया पहुंच गए हैं 36 पर 16 गेंदों का सामना करके. अब जीशान सही क्या कर सकते हैं? 2 गेंदों में एक्चुअली उनका पहला ओवर बहुत अच्छा गया था, सिर्फ 4 ही रन आए थे, लेकिन इस ओवर में 14 रन, माफ कीजिएगा 10 रन आए थे 2 गेंदों में. अब उसे 16 रन कर दीजिए 13 गेंदों में. क्योंकि क्रिकेट जो है, अब हम बात कर रहे थे मल्टीपल स्पोर्ट्स, बॉल जो है क्रिकेट फुटबॉल से जाकर फुटबॉल क्रिकेट स्टेडियम से हटकर फुटबॉल स्टेडियम में जाकर गिरी है. इतनी दूर मारी है सागर कटारिया ने. एंड वुड यू बिलीव इट, अब दोनों बल्लेबाज ऑलमोस्ट सेम स्कोर पर आ गए हैं. नीरज पटवारी 43 फ्रॉम 17, सागर कटारिया 42 फ्रॉम 17. 6-4-6 3 गेंदों में 16 रन आ गए हैं और एक भी विकेट नहीं गिरा है. और अगर हम डेविड लॉर्ड की फिलॉसफी यहां पर जोड़ दें, 6 ओवर के बाद अगर आपके ज्यादा विकेट्स नहीं गिरे हो तो आप एक्चुअली डबल कर सकते हो आपके उस स्कोर को. कौन बदला है? जीशान सही ने राइट आर्म राउंड द विकेट. और यहाँ पर थोड़ा बहुत चलिए कुछ सही होता हुआ उनके साथ, क्योंकि 1 ही रन मिलेगा. पुल करने का प्रयास, गेंद थोड़ी नीचे रही, बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और गेंद गई डीप स्क्वायर की तरफ 1 रन के लिए. 90 रन बिना किसी विकेट के नुकसान की बर्लिन सीसी. जी हाँ, और अभी पार्टनरशिप 90 रन की तरफ पहुंच गई है. दोनों प्लेयर्स इक्वल स्कोर पे आ गए हैं. यहाँ पे सागर कटारिया 43 फॉर 18 और नीरज पटवारी 43 ऑफ 17. तो अभी एक बात जरूर देखनी पड़ेगी कि कौन पहले अपनी हाफ सेंचुरी खत्म करेगा, पर उससे ज्यादा उन दोनों को ही एक बड़े टोटल की तरफ चाह लेने की जरूरत होगी. इस बार एक फ्लाइटेड डिलीवरी जैसा कुछ डाला सही ने और वो उनके काम आई, क्योंकि हम बात कर रहे थे दोनों बल्लेबाजों में से किसी एक की हाफ सेंचुरी होने की. यहाँ पे एक के तो असर दिख रहे नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी विकेट थमा दी है. एक स्लोअर डिलीवरी थी, शायद थोड़ा फ्लाइट दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा. एक मीडियम पेसर ने थोड़ी फ्लाइट दी, पर खैर वो उनके काम आया. और लॉन्ग ऑन की दिशा में मारने की कोशिश कर रहे थे वहां पे नीरज पटवारी और अपनी विकेट थमा बैठे. एक पहली नुकसान की कड़ी यहाँ पे दिख रही है बर्लिन की टीम के लिए. 90 एक विकेट के नुकसान पे और थोड़े नाखुश रह गए. अपनी 50 के इतने करीब थे वो, पर एक अच्छे टोटल की तरफ वो लेके गए हैं. एक अच्छा शुरुआत दिया है उन्होंने अपनी टीम के लिए और इसलिए काफी खुश रह गए. कुमार लक्ष्मण दास एक ब्रिलियंट फील्डिंग जॉब करते हुए, क्योंकि हमने अभी तक विक्टोरिया की टीम से देखा है कि वो फील्ड में इतने अच्छे नहीं रहे हैं. यहाँ पे
हमने पहले ही इस ओवर में एक फील्डिंग मिस्टेक देखी थी और नए बल्लेबाज आते हुए जितेंद्र वशिष्ठ वो भी क्षमता रखते हैं बड़े रन बनाने की। तो अभी देखना पड़ेगा यहाँ से अगले 4 ओवर, मतलब अभी तो ये छठी ओवर भी खत्म होने आए हैं कि अभी यहाँ से कितने रन बनेंगे, क्योंकि जैसे मेरे पार्टनर कार्तिक ने कहा कि तो यहाँ पे डबल कर सकते हैं वो तो देखना जरूर पड़ेगा। और जितेंद्र वशिष्ठ आते हैं और बोलते हैं कि जी हाँ, मैं वही इंटेंशन से आया हूँ। डाउन द ग्राउंड आया और बॉल को सीधा कट कर दिया है एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में। एक बाउंड्री के साथ की उन्होंने शुरुआत। ओवर की समाप्ति 94 फॉर 1 है बोलिंग सीसी की टीम। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। और यहाँ पर स्पिन का पदार्पण हो गया है और पहली गेंद पर स्वीप कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट यहाँ पर सागर कटारे द्वारा जो पहुंच गए हैं 47 रनों पर 19 गेंदों का सामना करके। गेंदबाज है हैदर अली, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 14 रन दिए थे। और जहां तक बर्लिन का सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्लिन सीसी का यहाँ पर एक अच्छा बैटिंग प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं हो रही है। काफी वाइड, काफी बाहर ऑफ स्टंप के, और इसे जाने दिया सागर कटारिया ने विकेट कीपर के दस्तानों में। ये एक मोमेंटम भी एक चीज होती है, क्योंकि हमने ये देखा था पहले 3 ओवर में सारा मोमेंटम नीरज पटवारी के साथ था और तभी सागर कटारिया सिर्फ 2 रन पे ही खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है सारा मोमेंटम सागर कटारिया ने अपने नाम कर दिया है और उसके वजह से शायद नीरज पटवारी आउट हो गए। लेकिन यहाँ पर सागर कटारिया या ऑलमोस्ट आउट होते रह गए। और क्या ये 4 है? क्योंकि छोटी गेंद थी, पुल किया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, खिलाड़ी ने गेंद को रोका लेकिन वो मोमेंटम ने खिलाड़ी को पीछे धकेल दिया। अब ये देखना जरूरी है कि गेंद को रोकते समय क्या खिलाड़ी का दायां पैर बाउंड्री लाइन के बाहर था? मुझे ऐसा लग रहा था। और जब गेंद को रोक रहे थे तभी उनका दायां पैर जो है बाउंड्री लाइन के बाहर था और फिर उन्होंने गेंद को अंदर धकेला। अब मेरे हिसाब से तो ये चौका होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से शौर्या ने बॉलिंग टीम बोला था, बर्लिन टीम नहीं बोला था। तो इसके लिए मेरे कान किस तरह से काम कर रहे हैं उस हिसाब से मेरे आंख भी उस तरह से काम कर रही होगी, तो फिर ये 1 रन ही दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है, जो कैमरा एंगल मुझे दिखाई दे रहा है, शायद से ये जो है ये एक चौका ही दिया जाएगा। स्कोर जो है 99 पर पहुंच गया है और ये 7वें ओवर में, चाहे वो 1 रन हो या 4 रन हो, 100 रन तो कंफर्म्ड है ये 100%। और हम रुके हैं कि थर्ड अंपायर क्या दे रहे हैं। क्या यहाँ पर नहीं, 1 ही रन दिया है उन्होंने। तो एक मैं कहूंगा कि द बॉलर हैज गॉट अवे विद इट या फील्डर हैज गॉट अवे विद इट। अगली गेंद, छोटी गेंद, उसे पंच कर दिया जितेंद्र वशिष्ठ ने स्वीपर कवर की तरफ। सिर्फ 1 ही रन मिलेगा 6.3 ओवर के बाद 101, 1 विकेट के नुकसान पर। शौर्य, आपकी राय, क्या आपको लगा 4? मुझे तो लग रहा था वो 4 है, पर अभी तो सागर कटारिया सोच रहे हैं कि ठीक है चलो जाने देते हैं यहाँ पे। अभी इतना मार चुके हैं, थोड़े 3 रन ले लिए तो चलेगा, क्योंकि अभी वो पोटेंशियल रखते हैं और रन बनाने के लिए। 49 पर पहुंच गए हैं वो इस सिंगल के साथ और 102 पर बॉलिंग की टीम पहुंच गई है। और जितेंद्र वशिष्ठ अभी बल्लेबाजी करते हुए, उनका एक ही एम है कि मारने जाना है इस बार। स्वीप करने गए और उन्हें खुद पता था कि सीधा पैड को लगी है, एक प्लम है। ये बोल्ड है, एलबीडब्ल्यू है, क्योंकि अंपायर ने बोला वो बैटर जा रहे वापस। हाँ, वो बैटर तो जा रहे हैं वापस। मुझे तो एलबीडब्ल्यू ही लग रहा था, क्योंकि पैर को लगी है सीधा। नहीं, बोल्ड हुए हैं, मतलब पैर के बीच से जाकर बॉल जो है स्टंप को लगे। मेरे हिसाब से शायद बोल्ड ही हुए हैं। चलिए देखते हैं ऑफिशियल स्कोरर है क्या देते हैं, लेकिन बहुत ही फुल थी गेंद। ये जरा हम आई थिंक लाइट हमारे साथ धोखा कर रहा है, इसलिए हमें कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ,
पर हमें एक बार स्कोरर को बोल्ड देखना है। बोल्ड है, जी हाँ बोल्ड है। हैदर अली को अपना पहला विकेट मिलते हुए और जितेंद्र वशिष्ठ जल्दी वापस पवेलियन पे जा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा नाखुश हो गए, वो शॉट की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे मोमेंटम का बदलाव हो सकता है। जी हाँ 102 तो आ गए हैं, पर 102 से 120 पे उन्हें रुकना नहीं। अगर विक्टोरिया टीम रोक पाए तो बोलन टीम नाखुश रहेगी यहाँ से, क्योंकि बोलन सीसी एक समय पे लग रहा था कि 170 180 वो पहुंच पाएंगे, पर अभी अगर बैक टू बैक विकेट्स जाने की वजह से वो 120 130 पे ही पहुंच पाते हैं तो उनके लिए ये एक बुरी इनिंग्स की तरह रुख लेगा। अभी नए बल्लेबाज साहिल लाल आते हुए और उन्होंने भी आते ही एक छक्के के साथ की है शुरुआत। ये ओवर की समाप्ति जरूर होती है और एक बढ़िया 6 यहाँ पे की है ओवर की समाप्ति। उससे 108 पे 2 होगी बोलन सीसी की टीम। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए? एक और ओवर की शुरुआत जो है एक चौके के साथ हो गई है वहां पर। क्या वो चौका नहीं था? नहीं, ओके, 1 रन था। मुझे ऐसा लगा वो लाइन से मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा वो बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई गेंद। और बॉलर को इतना कामली रिएक्ट करते देखा तो मैं थोड़ा अजीब, मुझे सरप्राइजिंग लगा कि बॉलर इतना कामली कैसे रिएक्ट कर रहा है। पर चलिए 1 ही रन हुआ उस पहली गेंद पर। एलबीडब्ल्यू अपील, लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर लगती हुई गेंद जो है डीप थर्ड तक जाती हुई और वहां पर 1 ही रन मिलेगा। तो ये अच्छी शुरुआत यहाँ पर हसन अब्बास द्वारा। पहली गेंद पर 1 रन, दूसरी गेंद पर एक लेग बाय। 7.2 ओवर के पश्चात 110 हो गया है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। और कई बार हम कहते हैं कि एक टीम जो है कभी कभी आपको लगता है कि काफी अच्छा बैटिंग कर रही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप स्टार्ट कैसे करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फिनिश कैसे करें। ओ नो बॉल, और क्या शॉट मारा है! बेहतरीन शॉट सागर कटारे द्वारा, जिन्होंने पिछले ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। तो अभी तो उसको एक सेलिब्रेट किया एक छक्के के साथ। तो यहाँ पर नो बॉल तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसके साथ 6 रन भी मिलेंगे मुफ्त में और प्लस एक फ्री हिट भी मिलने वाला है। तो मैं ये कहने ही वाला था कि कभी कभी मोमेंटम जो एंड ऑफ द इनिंग्स में होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जो आखिरी के 2 ओवर या 3 ओवर जिस टीम के नाम जाती है, वो अगले इनिंग्स में पहले 3-4 ओवर में वो रहती है। और फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा था कि एफसी विक्टोरिया वापस आ ही रही है, लेकिन मेरे मुंह से वो शब्द निकलते उसके पहले इनके हाथ से गेंद छूट गई। और मेरे हिसाब से छूट ही गई होगी, कोई इतना ऊपर क्यों डालेगा। बीमर था और रिएक्शन काफी अच्छा था सागर कटारिया का। 6 थमा दिया, पर फ्री हिट पे कुछ भी नहीं मिलता हुआ। एक धीमी गति की गेंद, लेंथ बॉल, उसे पुल करने का प्रयास, चूक गए कटारिया और एक डॉट बॉल। तो फ्री हिट पे कुछ नहीं, लेकिन ये ओवर में अभी तक 9 रन आते हुए 3 गेंदों में 117 2 विकेट के नुकसान पर बर्लिन सीसी। जी हाँ, यहाँ पे सागर कटारिया एक अच्छी इनिंग्स अपने लिए बना तो चुके हैं, पर अभी उसको एंड जो ये इनिंग्स को ही, अपनी टीम के इनिंग्स को एंड कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा। जी हाँ, उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो जो फुटबॉल फील्ड है वहां पे ही बॉल मारेंगे। जो फुटबॉल और क्रिकेट का अमेलगमेशन है वो काफी अच्छे से करना चाहते हैं। इस बार वापस काउ कॉर्नर्स की दिशा में वो छक्का मार दिया है और 62 पे पहुंच गया। यहाँ पे 123 for 2 है बर्लिन की टीम, और वो जो 150 का स्कोर था उधर उनका लक्ष्य है वो जो 150 प्लस जो स्कोर है। सागर कटारिया वही सोच रहे हैं कि मैं अपनी टीम को वहां पे कैसे पहुंचाऊं, और वो उसी के तरफ ले जा रहे हैं। और इस बार और एक काफी बेहतरीन शॉट, जैसे आपने कार्तिक का रिएक्शन सुना होगा उससे ही पता चलता है, ये दिखने में ही
एकदम ब्यूटीफुली खेला गया था यहाँ पे सागर कटारिया से, और पुल कर दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, और एक छक्का और एक होगा, 3 छक्के आ चुके हैं ये ओवर में। एक तो नो बॉल का छक्का था, उसके बाद इसके पहले काउकानस का 6 और ये पुल शॉट जो एक छक्का था। तो सागर कटारिया जो शुरुआत स्लोली कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने पेसअप किया और तब से उनकी जो रेलगाड़ी छूटी है वो छूटी गई है, जो स्पीड पकड़ी है वो काफी बेहतरीन। इस बार वापस सीधा मारने की कोशिश, शायद टाइम नहीं कर पाए और फील्डर भी उस कैच को पकड़ नहीं पाए। लॉन्ग ऑफ के फील्डर भाग के आ रहे थे मिड ऑफ की तरफ वो कैच पकड़ने के लिए, हाथ में आ गई थी उनकी गेंद पर फिर छोड़ दी उनने कैच। यही चीज विक्टोरिया की टीम को नहीं करनी। जमीर हैदर थे वो फील्डर, जमीर हैदर, जी हाँ, और जमीर हैदर नाखुश रह गए यहाँ पे। खैर वो कैच ड्रॉप के साथ हुई ओवर की समाप्ति। 130 फॉर 2 होगी बॉलिंग की टीम 8वें ओवर के बाद। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मेरा सवाल होने वाला था, क्योंकि मुझे इतनी फास्ट हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या। मुझे एक्चुअली शौर्य से पूछना पड़ा, ऑफ कोर्स ऑफ है, कि हुआ क्या यहाँ पर। मैच चालू हुआ, एक्शन रिज्यूम हुआ, तो उन्होंने कहा मैच चालू नहीं हुआ है, यहाँ पर विकेट गिर चुका है, क्योंकि शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग शॉर्ट थर्ड पे कैच गया है और उस्मान आरिफ ने कैच पकड़ा है। कुमार लक्ष्मण दास ने आते ही यहाँ पर विकेट चटका दिया और बहुत ही बड़ा विकेट सागर कटारिया का, क्योंकि वो आउट हो गए हैं 69 रन बनाकर 28 गेंदों में। उस्मान आरिफ ने शॉर्ट थर्ड पे कैच लपक लिया और कुमार लक्ष्मण दास, जिन्होंने अपने पहले ओवर में, अगर आपको याद रहेगा तो दूसरा ओवर डाला था, 6-4 खा रहे थे वो और 24 रन दिए थे, और तभी सागर कटारिया नहीं खेल रहे थे, तभी वो नीरज पटवारी खेल रहे थे, और उन्होंने आते ही ओपनर को आउट कर दिया 130 3 विकेट के नुकसान पर। तो स्कोर तो काफी अच्छा है, नो डाउट। जहां पर 170 लग रहा था, शायद अब 120 पे आकर रुक जाए टीम, बट फिर भी 150 भी काफी बड़ा स्कोर है किसी भी टीम के लिए। और यहाँ पर पैड्स पर गेंद, नए बल्लेबाज हैं अवैध जफर, फ्लिक करने का प्रयास, स्वीप करने का प्रयास, गेंद उनके पैड्स को लगकर शॉर्ट फाइन लेग की तरफ चली गई। तो 2 गेंदों में एक्चुअली कुमार लक्ष्मण दास के खाते में कुछ भी नहीं जाएगी, क्योंकि कोई भी रन जो है बल्ले से आई नहीं है सिवाय इसके। इस बीच अगली गेंद भी पैड्स पर फुल टॉस और उसे स्वीप कर दिया साहिल लाल ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक चौके के लिए। 135 3 विकेट के नुकसान पर बर्लिन सीसी। जी हाँ, यहाँ पे एक अच्छे टोटल की तरफ बर्लिन सीसी जा चुकी है। 135 भी मुझे लग रहा है कि इनफ होगा। विक्टोरिया की जो टीम है उसमें बैटिंग शुरुआत में है, पर आखिर में मिडिल ऑर्डर इतना इम्पैक्टफुल नहीं है उनका। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि इधर से कहाँ लेके जाती है बॉलिंग टीम। और मुझे लग रहा है कुमार लक्ष्मण दास ने अपने हाथ में शायद कुछ तो ग्रिप के लिए पाउडर बांधी है, पर मुझे कुश्ती की याद आ गई। पर उसके पहले यहाँ पे और एक चौका मारेंगे साहिल लाल, और वो जो मोमेंटम कंटिन्यू रख रहे हैं हर बल्लेबाज यहाँ पे आके, वो रुक रहा ही नहीं है। जो ओपनर्स ने चालू किया था, फिर मैं कहूँगा कि एक अच्छा कैमियो प्ले किया जितेंद्र वैश्य ने। कैमियो भी नहीं, एक चौका जरूर मारा उन्होंने, पर अपनी विकेट जल्दी गंवा दी, तो इतना उन्होंने टाइम यूटिलाइज नहीं किया। फिर साहिल लाल उसे कंटिन्यू कर रहे और आवेश जफर जो कप्तान है, उन्हें अब तक बल्लेबाजी का मौका तो मिला नहीं है, क्योंकि सारी बल्लेबाजी यहाँ पे साहिल लाल ही कर रहे हैं। इस बार अच्छी फील्डिंग हमने देखी मिड विकेट की तरफ, और 4 रन बचाए यहाँ पे होती है और एक ओवर की समाप्ति।
142 फॉर 3 पे है बॉलिंग की टीम, और आखिरी ओवर की तरफ हम अभी रुक ले रहे हैं। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू। हवाई फायर यहाँ पर और 6 रन मिलेंगे बल्लेबाज को जो हैं साहिल लाल। लेंथ गेंद थी, उसे पुल कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए 148, 3 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर बॉल इन सीसी। चलिए 150 एक अच्छा स्कोर तो है ही, लेकिन ये आखिरी ओवर अगर ये कंट्रोल में रख सके एहसान लतीफ तो काफी बड़ा एहसान करेंगे अपनी टीम पर, क्योंकि 8वें ओवर में 22 रन गए थे, लेकिन उसके बाद ओवर में 12 रन गए और अभी यहाँ पर कैच ड्रॉप हो गया। लेंथ गेंद थी और से हवाई फायर कर दिया कवर के ऊपर से, लेकिन खिलाड़ी को भेद नहीं पाए, लेकिन खिलाड़ी भी पकड़ नहीं पाए। एक्चुअली थोड़ा कैजुअल ले लिया वहां पर खिलाड़ी ने और गेंद को जो है पकड़ नहीं पाए। खिलाड़ी का नाम हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, शायद जीशान सही थे पर गलत किया उन्होंने, कैच नहीं पकड़कर। अगली गेंद 150 से 1 रन कम फिलहाल बॉल इन सीसी। 4 गेंदें शेष है, 4 गेंदों में क्या वो 160 तक पहुंच सकते हैं, 165 तक पहुंच सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा, ये देखना रहेगा। एहसान लतीफ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्विंग करने का प्रयास गेंदबाज से भी बल्लेबाज ने थोड़ा जल्दी स्विंग किया, गेंद बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर गई डीप स्क्वायर की तरफ। 1 रन मिलेगा वहां पर 150 रन पूरे होते हुए बॉल इन सीसी के 3 गेंदें शेष। हाँ, अभी यहाँ से 3 गेंदें बाकी है। साहिल लाल कोशिश जरूर करेंगे कि उनका स्कोर 18 है और उसमें वो 18 और ऐड कर पाए, क्योंकि 3 गेंदें बाकी है तो वो उतना ही कर सकते हैं। खैर हम देखना, मैं अभी एहसान लतीफ होप करेंगे कि वो एक्स्ट्रास ना दे और वो 3 बाउंड्रीज भी ना दे। 150 के आसपास ही ये बॉलिंग टीम को रोक पाए, क्योंकि अगर ये 150 से 160 तक पहुंच जाता है तो काफी बड़ा मुकाबला, काफी बड़ा स्कोर होगा। बेहतर डिलीवरी मैं कहूँगा एहसान की यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ये गेंद बॉल डाला, थोड़ा शॉर्टर था, थोड़ा पेस लाया ये बॉल में और बॉल जाके आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बॉल बैटर से दूर। और ये जो बॉल है, ये जो टेक्निक है बैटर से दूर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डालना, ये जब आप ज्यादा रन खा रहे होते हैं तब जरूर मोस्टली काम करती है, जैसे इस बार एहसान लतीफ के लिए किया। और डॉट गेंद होगी, 2 गेंदें और बाकी इस आखिरी ओवर में। इस बार भी वही ट्राई किया, पेस नहीं था बिल्कुल भी, और वो जब आप इसको अच्छे पेस से नहीं डाल पाते तो आप बैटर को मौका देते हैं यहाँ पे टाइम करने का। इस बार कट कर दिया गया था और एक बाउंड्री मिलेगी ऑफसाइड रीजन की तरफ। 154 रन आ गए हैं ऑन बोर्ड और अभी आखिरी गेंद बाकी। 160 का एम जरूर रहेगा साहिल लाल का। 22 फॉर 8, काफी अच्छा कैमियो उन्होंने अब तक खेला है और अपने कैप्टन को सादा गेंद खेलने ही नहीं दी। 7 रन उन्होंने बनाए हैं कैप्टन जफर ने और 4 डिलीवरी ही खेली है उन्होंने। साहिल लाल सारी टॉक विद द बैट कर रहे हैं। इस बार उन्होंने वो 6 मारने की कोशिश की और वो छक्का उन्हें जरूर मिलेगा। 160 पे पहुंच गई है बॉलिंग की टीम और एक बेहतरीन बैटिंग नॉक बॉलिंग की टीम से शुरुआत काफी बेहतरीन की थी। सागर कटारिया ने 69 ऑफ 28 उन्होंने, और नीरज पटवरी एक बेहतरीन पार्टनरशिप दोनों के बीच में। 43 ऑफ 18 नीरज पटवरी को। फिर जितेंद्र वशिष्ठ 5 रन पे आउट हुए, 3 गेंदें ही खेली उन्होंने। साहिल लाल एक मैं कहूँगा काफी ब्रिलियंट कैमियो, 9 गेंदें खेली और 28 रन ऑन बोर्ड। और आवेश जफर कप्तान, ज्यादा गेंदें खेलने नहीं मिली पर उन्होंने भी एक चौका मारा है, जरूर ऐड किया है वो बाउंड्री। 7 रन उनके बल्ले से 8 एक्स्ट्राज में। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो एहसान लतीफ 2 ओवर 33 रन, कुमार लक्ष्मण दास 2 ओवर्स 35 रन, एक विकेट उन्हें जरूर मिला। हसन अब्बास 2 ओवर्स 35 रन, जीशान शाही
कप्तान जो है 2 overs 25 रन और एक विकेट, अच्छी मैं कहूँगा कि एक बेहतर उनकी स्पेल रही। और हैदर अली 2 overs 28 रन एंड 1 विकेट। सो ये थी पहली इनिंग्स बोलिन सीसी की, और 161 टारगेट रहेगा विक्टोरिया टीम के लिए। क्या वो चेज कर पाएंगे कि नहीं, ये हम जरूर देखेंगे मिड इनिंग्स ब्रेक के बाद। You are listening to Flash News, brought to you by Crickong. Ladies and gentlemen, cricket fanatics from all around the world, welcome to another exhilarating edition of Flash News. I'm your host Isha, and get ready to be swept up in a whirlwind of cricket updates that are guaranteed to leave you both informed and exhilarated. So, fasten your seatbelts, because we are about to take you on a riveting journey through the latest cricket stories that are setting the sports world on fire. Get ready to witness the triumphant return of a true pace maestro. Jasprit Bumrah is making his grand entrance back onto the cricket field, and this time, he's stepping in as the captain for India in the upcoming T20I series against Ireland. After an absence of a staggering 326 days, Bumrah is gearing up to make his presence felt once again. But here is the twist: he's not just returning as a player, but as the leader of the pack. Now, the question on everyone's mind is, does this added responsibility add to the pressure for the veteran pacer? We have got a fascinating perspective from none other than ex-BCCI selector Sabah Karim. He dives deep into the dynamics of Bumrah's newfound captaincy role, shedding light on how this experience might actually help Bumrah elevate his game to new heights. From mastering his skills to fine-tuning his strategies, could this captaincy stint be a blessing in disguise for Bumrah? This is a segment you absolutely don't want to miss. Greetings, cricket aficionados. As the Asia Cup and the Cricket World Cup loom closer on the horizon, the selectors have their work cut out for them. Now the burning question: will KL Rahul and Shreyas Iyer recover in time to make it to the squad? The answer remains tantalizingly uncertain, but fear not, because we have got the ultimate insider's perspective. Enter former India wicketkeeper batter Sabah Karim, who's unraveling the intricate puzzle of player substitutions. He walks us through the various scenarios, unveiling how young talents like Ishan Kishan and Suryakumar Yadav could step up to the plate if the need arises. With a dash of expert analysis, a sprinkle of insightful predictions, and a whole lot of anticipation, this segment is your one-stop shop for all things squad related. The stage is set for some thrilling twists and turns. Hey there, fellow cricket enthusiasts. The echoes of the Ashes might have quieted down, but the impact of England's audacious baseball strategy is still reverberating. Enter the legendary Aussie skipper Ricky Ponting, who's peeling back the curtain to give us an exclusive look into the psyche of the Australian team as they grappled with England's unique approach. From heart-stopping victories to nail-biting draws, Ponting delves into how the Australian bowling attack was left astounded by the unconventional baseball phenomenon. But don't assume it's all gloom. Ponting serves up an insightful analysis of the 2-2 scoreline that had the cricketing world buzzing. Get ready to relive the Ashes through the eyes of one of the game's greatest. This is a perspective you won't want to miss. Hello, cricket devotees. It's time to tip our hats to a cricketing luminary who's gracefully walked off the international stage. Lahiru Thirimane, the Sri Lankan cricket star, has bid adieu to the world of competitive cricket. The Executive Committee of Sri Lanka Cricket has accepted his resignation, and as we bid farewell, we are also taking a fond look back at Thirimane's remarkable journey. From captivating test battles to electrifying ODIs and thrilling T20Is, Thirimane's contributions have woven themselves into the tapestry of the sport. As we celebrate his accomplishments, we are reminded that cricket is not just a game, it's a legacy that lives on. Brace yourselves for a twist in the tale. Marlon Samuels, the enigmatic former West Indies cricketer, has found himself entangled in a web of controversy. Found
Found guilty of breaching the anti-corruption code set by the Emirates Cricket Board, Samuel's cricketing journey is one of both triumphs and trials. From undisclosed payments to cooperation wars, we are delving into the labyrinth of events that have led to this verdict. But this isn't the first time Samuels has walked the tightrope of controversy. From on-field clashes to social media uproars, his career has been anything but ordinary. Buckle up as we navigate through the highs and lows of Samuel's cricketing saga. Dear cricket fans, are you ready for a behind-the-scenes peek at the magic of stadiums? The iconic M.A. Chidambaram Stadium is gearing up to host the ICC Men's ODI World Cup, and the Tamil Nadu Cricket Association is leaving no stone unturned in this grand preparation. From state-of-the-art LED floodlights casting their glow to rejuvenated stands ready to embrace the cheering crowds, this legendary venue is undergoing a splendid transformation. But that's not all. We're diving deep into the heart of this cricketing cathedral, unveiling the meticulous efforts to create an unforgettable experience for both players and fans alike. Before we wrap up, fantasy team enthusiasts can now revolutionize their gaming experience with our Crickong app. Prepare to unlock the full potential of your team selection as our app provides a wide array of interactive features and expert predictions. Our esteemed analysts offer valuable insights and game-changing analysis, giving you a strategic advantage in the highly anticipated live matches. We emphasize the significance of considering multiple factors and making informed decisions to optimize your team's performance. Immerse yourself in the thrill of the game with our engaging live commentary and captivating podcast. We highly value your input and encourage you to share your feedback through our interactive chat option. It's time to take your fantasy team selection to new heights and dominate the competition like never before. And there you have it, another riveting chapter of Flash News concludes. Remember, the cricketing world never sleeps, and neither do we. So, stay engaged, keep those cricketing spirits soaring high, and join us next time for another whirlwind of updates from the ever-evolving universe of cricket. I'm Isha, your cricket confidant, signing off for now. This is Flash News, brought to you by Crickong. The much-anticipated 2023 Asia Cup is gearing up to be a monumental event, marking the 16th edition of this prestigious cricket tournament. Set to unfold in the realm of one-day internationals, a total of 6 teams are poised to vie for supremacy on the field during this edition. Mark your calendars for the cricketing extravaganza, as the Asia Cup is scheduled to grace the cricketing world in the months of August and September 2023. With the excitement building up, Crickong will provide news and live score updates throughout the tournament. Be sure to follow our amazing app. Only on Crickong.
and the target of 161 needs to be chased by the Victoria team here. We are back after the mid-innings break, and it is Victoria's two new openers coming in, Kumar Lakshman Das and Walid Azam. It was Kumar Lakshman Das who took a single, and Walid has been on strike, and he will leave his strike as soon as possible as he loses his wicket to the bowler who has arrived here. The first man down for the Victoria team, Awais Zafar, the captain, takes the wicket of Walid Azam, and a brilliant catch by Sadam Gill out there. And the first man down for Victoria 89, and it is 1-1 now. The match becoming tougher and tougher. They required 161 runs of those 10 overs, and now they require 160 of 10 overs and -2 balls. And their first man, the openers who built up the partnership for the Berlin CC, who got them towards a big total, are gone back to the pavilion, and the captain Awais Zafar bowling some brilliant deliveries out there. He is doing a fantabulous job. This time outside the off stump, the ball swung quite so well. Outswinger wanted the edge of Kumar Zishan Sahi, the new batter who has arrived, and couldn't get the edge, but will be happy with that dot and the brilliant delivery. Keeper also doing no mistakes, collects the ball with utter charm. This time again, and there is an appeal also made. The umpire is given a wide. The bowler can't believe, the keeper can't believe, the players, the fielders can't believe. They're talking to the umpire. The ball was bowled towards the wide line. The bat was inch close to the ball, and the umpire also waited for a long time to give that wide. The appeal was done, and the bowlers and the bowling fielding team of the Berlin CC cannot believe whatsoever, but nevertheless it would be Awais Zafar who has to reel it again. This time the same show of pace, the same swing, and getting the better of the batter. If we talk about that replay and the visuals we are seeing, I think there was a slight edge, or there was definitely a slight edge, and it would have been 2 for 2, but nevertheless it would be Awais Zafar who will have to try that wicket, try that delivery again, and get that breakthrough. This time a Yorker, but just flicked away by Sahi to take a single. That would be 3 runs on the board. First man is gone, and one more ball remains for the captain Awais Zafar. He is bowling some brilliant deliveries, and he will be asking a lot of questions to the new batter Kumar Lakshman Das as well. Lakshman Das did get some breakthroughs while he was bowling. This time the ball was bowled out down the leg, and it swung back in, but it was pushed away quite so well by Kumar Lakshman. That's a 4 to end the over. It is 7 for 1 for the Victoria 89 team. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating match. एक ओवर के बाद यहाँ पर स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाजी
काफी अच्छी दिख रही है यहाँ पर बर्लिन सीसी की। और जहां तक नए गेंदबाज का सवाल है, उनका नाम है इमरान बुखारी। छोटी गेंद शुरुआत करने के लिए पुल करने का प्रयास जीशान सही द्वारा, लेकिन प्रयास जरूर सही था लेकिन नतीजा बिल्कुल भी सही नहीं था क्योंकि पूरी तरह से चूक गए और गेंद सीधा चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद को देख के ऐसा लग रहा है कि काफी तेज गेंदबाज हैं ये इमरान बुखारी, और जितनी तेज गेंदबाजी करेंगे उतना ही उनको फायदा होगा क्योंकि ये मैटेड विकेट है। यहाँ पर आपको पेस आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा, लेकिन अगली गेंद पर काफी अच्छी बैटिंग करी जीशान सही ने। आगे आए, आउट स्विंग को कवर किया और स्विंग के साथ ही बल्ले का मुंह खोला और खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर एफसी विक्टोरिया। टारगेट बहुत ही बड़ा है यहाँ पर, क्योंकि एक समय कंफ्यूज हो गया क्योंकि अगर मैं अचानक से स्कोर कार्ड देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा 89 नीड 150 रन। मैं एक्चुअली कंफ्यूज होगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूं, और फिर पूरी तरह से उनका नाम पढ़ा और एक्चुअली इनका नाम भी बर्लिन है। तो जिनके सामने खेल रहे हैं वो उनका पूरा नाम है बर्लिन सीसी और इनका पूरा नाम है एफसी विक्टोरिया 89 बर्लिन, जिनको 150 रन चाहिए 52 गेंदों में। तो काफी कंफ्यूजिंग है। चलिए इनको थोड़ी आसानी के लिए हमारे लिए और आपके लिए भी हम इनको विक्टोरिया ही नाम कर देते हैं। और यहाँ पर एक आसान सा रन गिफ्ट कर दिया विकेट कीपर ने, और विकेट कीपर फ्रस्ट्रेशन में देख रहे हैं बॉलर की तरफ। बॉलर क्या बोलेंगे, गलती तो विकेट कीपर की है क्योंकि एक डॉट बॉल होना चाहिए था। आगे आकर खेलने का प्रयास किया जीशान सही ने, चूक गए और विकेट कीपर ने ऐसी एक बेरसो टाइप डिसमिसल इफेक्ट करने का प्रयास किया क्योंकि जीशान सही क्रीज के बाहर थे। अब किस्मत देखिए, गेंद स्टंप्स को तो लगी, बेल से गिरे नीचे, लेकिन बॉल डिफ्लेक्ट होकर शॉर्ट मिड विकेट तक गई और वहां पर कोई था नहीं, इसलिए बल्लेबाजों ने एक बाई चुरा लिया। अब विकेट कीपर गेंदबाज की तरफ देख रहे हैं ये कहने के लिए कि देखिए किस्मत, मैं क्या करूं, मैंने डायरेक्ट हिट लगाया तो फिर भी एक रन कंसीड किया। तो शायद अगर मैं बॉलर होता तो मैं बोलता रहा आपको डायरेक्ट हिट लगाने को कहा किसने, क्योंकि बैटर तो उधर ही थे, सिर्फ उन्हें एक कदम पीछे आना था। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से फास्ट गेंद, लक्ष्मण दास ने उसे पुश कर दिया पॉइंट की तरफ। बहुत ही बढ़िया ओवर, अभी तक सिर्फ 5 रन आते हुए 4 गेंदों में 12 रन, और पहले ओवर में भी ज्यादा रन नहीं आए, सिर्फ 7 ही रन आए। और अगर मैं गलत नहीं हूं, जब बर्लिन बैटिंग कर रही थी तो पहले 2 ओवर में 30-35 रन आ गए थे। तो उतना यहाँ पर एक्चुअली मैं वो अजम्पशन क्यों लगा रहा हूँ, 2 ओवर में 39 रन आ गए थे। तो उतना बड़ा गैप है इन दोनों टीम्स में जहां तक पहले 10 गेंदों का सवाल है। बेहतर शॉट, आगे आए, चहलकदमी का इस्तेमाल किया और उस छोटी गेंद को पुल कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए कुमार लक्ष्मण दास द्वारा। अब स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर एफसी विक्टोरिया 89 और कुमार लक्ष्मण दास को अपना पहला चौका यहाँ पर प्राप्त होता हुआ। दूसरा चौका, 9 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे पहुंच गए वो 4 गेंदों का सामना करने के बाद। वहीं पर दूसरे छोर पर जीशान सही खेल रहे हैं 5 रन बनाकर 6 गेंदों में, और एक्स्ट्रास जो है यहाँ पर सिर्फ 2 रन यहाँ पर एक्स्ट्रास दिए गए हैं। आवेश जफर पहले ओवर में 7 रन, इमरान बुखारी अभी तक 5 गेंदों में 8 रन। आखिरी गेंद एक बार फिर से लेंथ गेंद आगे आकर पुल करने का प्रयास, चूक गए लक्ष्मण दास और एक डॉट बॉल। 2 ओवर के बाद यहाँ पर एफसी विक्टोरिया 89-16 1 विकेट के नुकसान पर 161 के लक्ष्य का पीछा करते हुए। Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an... तीसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए सद्दाम गिल आ गए, एलबीडब्ल्यू अपील और अंपायर ने आउट दे दिया है। बहुत ही क्लोज लग रहा था, शायद एक 5% डाउट था मेरे मन में कि इंपैक्ट क्या आउटसाइड ऑफ स्टंप था, पर अगर आप रियल टाइम पे देखेंगे तो आपको आउट ही लगेगा। नहीं, इंपैक्ट बिल्कुल इन लाइन ऑफ द स्टंप्स था और ऑफ स्टंप को लेके जा रही थी गेंद, ऐसा हमें लग रहा है। छोटी गेंद थी, उसे पुल करने का प्रयास था, लेकिन बॉल पिच होकर स्किड हुई और इसी के साथ यहाँ पर जीशान सही कप्तान, उनकी पारी समाप्त। 7 गेंदों का सामना करके 5 रन पर आउट हो गए हैं और सद्दाम गिल ने एक बेहतरीन शुरुआत कर दी है अपने इस पारी के लिए, क्योंकि पहली गेंद पर उन्होंने यहाँ पर विकेट निकाल दी है। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ विक्टोरिया का 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर 161 का मैसिव रन चेस ये वो कर रहे हैं। एक मैच हुआ था जहां पर विक्टोरिया खेल रही थी आईसीए बर्लिन के अगेंस्ट
और उसमें उन्होंने 176 रन दिए थे 10 ओवर में, और जवाब में इन्होंने सिर्फ 83 रन ही बनाए थे। तो बैटिंग उस हिसाब से प्रोस्पेक्ट्स कुछ ज्यादा सही नहीं लग रहे हैं, पर जो बीत गया सो बीत गया, और आप इतिहास से सीख ही सकते हैं, आप इतिहास को बदल तो नहीं सकते। तो जो भी हो चुका है वो हो चुका है, और अब ये कोशिश करेंगे कि वो जो हो चुका है उसको दोहराया ना जाए। लेकिन फिलहाल इस मैच में इनकी स्थिति जो है काफी पतली नजर आ रही है, और लक्ष्मण दास को अब ज्वाइन किया है हसन अब्बास ने, दाएं हाथ के बल्लेबाज। और इंटरेस्टिंग है, उन्होंने जो गार्ड लिया है वो ऑफ स्टंप के बाहर का लिया है, तो तीनों स्टंप्स ब्लॉक करके बैठे हैं, और फिर भी कनेक्शन नहीं है। लेंथ गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, और से पुल करने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए यहाँ पर हसन अब्बास। आप गार्ड तो किधर भी ले सकते हैं, ये आपके कंफर्ट जोन के ऊपर है। नॉर्मली एक बैटर जो है ऑफ लेग स्टंप या मिडिल स्टंप का गार्ड लेता है, अगर वो लेग स्टंप का गार्ड लेता है नॉर्मली वो ये दर्शाता है कि वो इनसाइड आउट मारने वाला है, और अगर वो ऑफ स्टंप या उसके बाहर का गार्ड लेता है तो वो ये दर्शाता है कि वो लेग साइड पे मारने वाला है। लेकिन अगर उसे वो लेंथ नहीं मिली तो फिर वो लेग साइड पे मारना थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ पर वही देखने मिला है। 2 गेंदे दोनों ऑलमोस्ट सेम लाइन पर ऑफ स्टंप के बाहर, और लेंथ भी मोर और लेस सेम, फुल या फिर गुड लेंथ, दोनों पे स्विंग एंड मिस हसन अब्बास द्वारा। 2.3 ओवर के बाद विक्टोरिया 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, यहाँ पे अभी काफी प्रेशर हसन अब्बास और कुमार लक्ष्मण दास पे होगा, क्योंकि उन्हें वो बिग रन मिल रहे, बड़े रन मिले नहीं है। इस बार भी एक डॉट बॉल, और सद्दाम गिल क्या बढ़िया ओवर डाल रहे हैं। यहाँ पे 4 गेंदें डाली है, 1 विकेट चटकाया है, और 1 भी रन नहीं दिया है अब तक। 16 रन 2 विकेट जा चुके हैं विक्टोरिया टीम के। और अभी दोनों बल्लेबाज आके बात करेंगे कि क्या करना चाहिए यहाँ पे हसन अब्बास को, क्योंकि वो तो टाइम नहीं कर पा रहे, और कुमार लक्ष्मण दास जाके उन्हें बोलेगा कि आप एक सिंगल दे दीजिए मुझे, मैं बाकी का काम करता हूँ। इस बार आए डाउन द ग्राउंड, और उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, मैं वो बड़े शॉट खेल सकता हूँ। ऑफ स्टंप की दिशा में गेंद डाली थी, और ऑफ साइड पे ही कट कर दिया यहाँ पे हसन अब्बास ने। उन्हें मिलेंगे पहले रन, और वो हो गए 6। तो यहाँ पे 1 ऑड बाउंड्री जरूर मिली है यहाँ पे विक्टोरिया की टीम को, और उनके रन बढ़े गए यहाँ पे। पर ये थोड़ा नहीं, काफी स्लो मैं कहूँगा अगर आप इस चीज को देखना चाहें, क्योंकि 160 प्लस 1 रन चाहिए उन्हें। एक बड़ा स्कोर, एक बड़ा शुरुआत चाहिए थी उन्हें। पहले ही ओवर से उन्हें हेवी हिटिंग की शुरुआत की जरूरत थी, पर ओपनर ही जल्दी जाते हुए, पहला विकेट ही जल्दी गिरते हुए मोमेंटम पूरा हिल गया। इस बार एक शॉर्टर डिलीवरी, और ये सिर के ऊपर से गई। अंपायर कहेंगे जी हाँ ये एक वाइड है, और ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप भी थी, तो ये तो दोनों ही तरह से वाइड हो गई है। और 22 for 2 है विक्टोरिया टीम। काफी 2 देखने मिल रहे हैं हमें स्कोर बोर्ड पे, पर ये जो इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स है वो कौन सी टीम ले जाएगी ये तो जरूर देखना पड़ेगा। पर बोलिन का पलड़ा यहाँ पे भारी होते हुए दिख रहा है, और आखिरी गेंद इस ओवर की जरूर एक अच्छे शॉट के साथ समाप्त करना चाहेंगे यहाँ पे बल्लेबाज, और उन्होंने की है क्या नहीं हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी विजुअल कवरेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई। पर जी नहीं, ये एक डॉट होगी, और उसी के साथ होती है ओवर की समाप्ति। 23 for 2 है विक्टोरिया। Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. आओ मेरे लाल, ये कहा है लक्ष्मण दास ने, और साहिल लाल को पहली गेंद पर एक छक्का थमा दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और अगली गेंद पर ऑलमोस्ट एक बाउंड्री थी, लेकिन एक बढ़िया फील्डिंग एफर्ट
वहां पर जतिंदर वशिष्ठ द्वारा लॉन्ग ऑन से आए गेंद को रोकने के लिए और गेंद को रोक दिया और सिर्फ एक ही रन मिलेगा। लेकिन एक कंपैरिजन अगर हम बताएं कि इस स्टेज पर जो बर्लिन की टीम थी वो थी 55 बिना किसी विकेट के नुकसान के, और इस समय पर इनका स्कोर है 31 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन चलिए एक पार्टनरशिप तो बन रही है, अगर आपकी पार्टनरशिप बनती जाए तो धीरे धीरे आप वो रन्स भी बना सकते हैं। आगे अगर फुल टॉस पे ले लिया इसे और डीप मिड विकेट पे खेल दिया, 1 रन मिलेगा वहां पर। 32 2 विकेट के नुकसान पर 129 रनों की आवश्यकता 39 गेंदों में। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा स्लो स्टार्ट मैं अभी भी कहूँगा। वो 1 और 2 और 6 आ रहे हैं पर वो काफ़ी नहीं है विक्टोरिया की टीम के लिए। दोनों बल्लेबाज कुमार लक्ष्मण दास बेहतर लग रहे हैं दोनों में से, और उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है। वो ओपनर है इस टीम के, तो उनके ऊपर वो दबाव अभी बढ़ता जाएगा क्योंकि 38 डिलीवरीज ही बाकी है, 128 रन चाहिए। तो वो जो प्रेशर है वो एक टाइम पे वो बॉइलिंग प्रेशर हो जाता है और फिर आप तब विकेट गंवाने लग जाते हो। ऐसे प्रेशर कुकर में जैसे अभी मुझे तो लग रहा है कुमार दास के सर पे वही चल रहा रहेगा कि अभी मैं क्या करूं और मैं अपना विकेट गंवा दूंगा। जैसे मैंने कहा ये प्रेशर बढ़ के विकेट की तरफ बढ़ता है और लक्ष्मण दास के साथ भी वही हुआ। पुल करना चाहते थे, एक छोटी डिलीवरी थी और कीपर ने एक अच्छी कॉलिंग भी दिखाई। हमने देखा है यहाँ पे ऐसे थोड़ी सिली मिस्टेक्स होते हैं, पर कीपर ने कहा गेंदबाज को ईशान आदित्य ने कि मैं पकड़ लेता हूँ कैच, मैं लपक लेता हूँ कैच क्योंकि मेरे पास ग्लव्स है, और गेंदबाज को कहा और गेंदबाज रुके वहां पे और उन्होंने एक काफी अच्छा कैच पकड़ा है। जो बल्लेबाज थोड़े अच्छे लेह में दिख रहे थे लक्ष्मण दास का विकेट लेने में, और अभी 33 for 3 पहुंच गई है विक्टोरिया की टीम। हमने पहले 22 for 2 देखा था, अभी 33 for 3 देख रहे हैं, तो ये स्थिति बिल्कुल नहीं अच्छी होगी उनके लिए। आखिरी गेंद इस साहिल लाल के ओवर की, और नए बल्लेबाज आते हुए जामीर हैदर, और अभी देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। हमने जैसे पहले भी विक्टोरिया के गेम्स में देखा है कि उनकी बल्लेबाजी इतनी डीप नहीं है और उनमें इतना लय भी नहीं है। तो अभी तो फिलहाल इस टूर्नामेंट की शुरुआत खत्म होने आई है, जो स्टार्टिंग पीरियड था वो अभी खत्म होने आया है। तो अभी सारी टीम्स को वो एक लय पकड़नी पड़ेगी, और अगर विक्टोरिया टीम को यहाँ से बेहतर बन के निकलना है तो कुछ सोल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। पर यहाँ पे मैच जाती हुई बर्लिन की टीम की तरफ 4 ओवर की समाप्ति 34 for 3 है विक्टोरिया 89। Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass. 2 वाइड्स यहाँ पर मिस्टर गिल डालते हुए, एस गिल, लेकिन शुभमन गिल नहीं, सद्दाम गिल। और ओवर का प्रारंभ तो हो चुका है, 2 गेंदें डाली जा चुकी है, लेकिन दोनों वाइड्स में तब्दील हो चुकी हैं। 36 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर विक्टोरिया की टीम, और इस समय पर बर्लिन की टीम थी 60 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, यानी 24 रन आगे। और इसी बीच एक लेंथ गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर सद्दाम गिल द्वारा, और जमीर हैदर ने कदमों का इस्तेमाल किया, आगे आए, अक्रॉस गए और इसे स्वीप कर दिया है। एक्चुअली हाँ, स्वीप ही किया है उन्होंने फास्ट बॉलर को डीप मिड विकेट के ऊपर आधे दर्जन रन के लिए। तो 3 गेंदें फेंकी गई हैं, लेकिन 3 गेंदों में 2 वाइड। तो टेक्निकली एक गेंद पर
जमीर हैदर ने 8 रन स्कोर कर दिए हैं अपनी टीम के लिए। विक्टोरिया 42 3 विकेट के नुकसान पर 119 रनों की आवश्यकता 45 गेंदों में। हालांकि गैप बहुत बड़ा है, लेकिन एक पीरियड था जहां पर ऐसे लग रहा था कि बर्लिन थोड़ी स्लो हो रही थी। तो 5वें ओवर में 14 रन आए, 7वें ओवर में 14 रन आए, 9वें ओवर में 12 रन आए, लेकिन बाकी हर ओवर में 14 या 14 के ऊपर रन आए हैं। तो 14 इंटू 7 आप अगर देखें तो उन्होंने 6 ओवर में 14 या 14 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन यानी 6 ओवर में उन्होंने 90 या उससे ज्यादा रन बनाए। और जो 4 ओवर थे जहां पे रन नहीं बनाए, वहां पर उन्होंने फिर भी क्लोज टू 40 रन तो बना ही दिए हैं। तो इसके लिए इतना आसान नहीं है यहाँ पर कवर अप करते रहना। चौथे ओवर में 6 ही रन आए थे जब ये बैटिंग कर रहे थे बर्लिन, लेकिन विक्टोरिया की शुरुआत ही यहाँ पर अच्छी नहीं हो पाई है और इसके वजह से उनके पास कुछ मोमेंटम ही नहीं मिल पा रहा है। एक यॉर्कर लेग डिलीवरी, लो फुल टॉस, उसे सिर्फ डैप कर दिया डीप थर्ड की तरफ, 2 रन मिलेगा वहां पर। 44 3 विकेट के नुकसान पर विक्टोरिया 117 रनों की आवश्यकता 33 गेंदों में। जी हाँ, यहाँ पे 117 रन की आवश्यकता है और अभी मैच काफी ज्यादा शिफ्ट डायल इनटू करेगा बॉलिंग की तरफ, क्योंकि अगर हम प्रिडिक्शन का अगर हम काटा देखें तो वो काफी बॉलिंग की तरफ जा चुका है और अगर हम बॉल का डायरेक्शन देखें तो वो भी काफी ऑफ वाइड के तरफ जा चुका है, क्योंकि बॉल तो काफी बाहर थी। शायद अंपायर देख रहे हैं कि ये नो बॉल होगी कि वाइड बॉल होगी, क्योंकि थोड़ी पिच के बाहर भी जाते हुए दिख रही थी और इसलिए एक डिले सा है। 44 रन आ चुके हैं और ये जो विक्टोरिया के बैटर्स है वो काफी ज्यादा नाखुश हो गए यहाँ पे, क्योंकि रन्स तो बिल्कुल नहीं आए हैं। रन्स आए भी है तो विकेट उन्होंने गंवाई है। और जी हाँ, यहाँ पे अंपायर आखिर में ये स्क्वायर लेग एंगल से, पॉइंट एंगल से कैसे मालूम चला कि गेंद वाइड है? मुझे तो नहीं समझ, मुझे भी समझ नहीं आया। तो पर शायद अंपायर को आ गया था इसलिए उन्होंने दे दी है वाइड। इस बार वापस डाला वही दिशा में उन्होंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप और बल्लेबाज ने कट करने की कोशिश की पर टाइम नहीं कर पाए। फील्डर वहां पे रेडी थे पकड़ने के लिए पर उनसे भी कैच छूटी और कैच छूटने के बाद उन्होंने रन आउट की जरूर कोशिश की है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये रन आउट है कि नहीं, क्योंकि काफी कुछ हो रहा है इस गेम में और काफी नजदीकी मामला है, पर शायद बल्लेबाज अंदर आ चुके हैं। शायद कीपर के हाथ में बॉल नहीं था। हाँ। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कीपर ने अपील भी नहीं किया। मेरे हिसाब से वही हुआ कि बॉल आने के पहले उन्होंने स्टंप्स को बिखेर दिया और शायद अगर वो वैसा नहीं करते, बल्लेबाज जो है जमीर हैदर, वो आउट हो जाते थे। जी हाँ, और यहाँ पे रन्स इन डिस्पैरिटी बन रहे हैं विक्टोरिया की टीम को और यही हो रहा है क्योंकि कैचेस ड्रॉप होने के वजह से रन्स बन रहे हैं। इस बार वापस एक कैच ड्रॉप, ये मिड ऑन की तरफ बॉल जाना तो नहीं चाहता था जीशान का, क्योंकि वो मार रहे थे मिड विकेट की तरफ, पर एक भारी सा मिस टाइम शॉट और मैं कहूँगा कि एज ही लगा है, बॉटम हाफ ऑफ द बैट लगा और 3 फील्डर उस बॉल की तरफ आते हुए लॉन्ग ऑन के फील्डर आए और उन्होंने कोशिश जरूर की। मैं कहूँगा एक ड्रामेटिक डाइव उन्होंने मारी और वो कैच तो लपक नहीं पाए और एक्स्ट्रा रन जरूर मिल गए यहाँ पे, पर ये काफी नहीं होगा। यहाँ पे बड़े छक्के और बड़े चौकों की जरूरत है और बस बैट स्विंग ही हो रही है, वो बैट से रन बन तो नहीं रहे। यहाँ पे ओवर की हुई समाप्ति 48 for 3 है विक्टोरिया 89 टीम। Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app.
Don't be under the bat and over the ropes. Well, that's a nice way to start the sixth over for Zamir Haider. Right under the bat from Jatinder Vashisht. Zamir Haider has lofted this right over long on for half a dozen. 54 for 3, then 107 needed from 29 balls. Is this a hopeless case already? Because at this stage, the Berlin CC were 79 for no loss. So 25 runs behind, but they're trying to make it up now. Another one, another six. Sixes in this over from Zamir Haider. First one was over mid-on. This one, a low full toss, swept away over deep mid-wicket for half a dozen. 2 balls, 12 runs, 60 for 3 in 5.2 overs. Berlin, at this point in time, were 83 for no loss. 23 runs is the difference, but they're trying to claw it back. They're trying to pull it back. Well, you never know. And, well, all of a sudden, I'm actually now seeing the difference between the Berlin wicketkeeper and the Victoria batter. It's actually he's way too tall as compared to the Berlin batter and Victoria batter. And this one is the hat-trick of sixes. It is! 3 sixes in a row by Zamir Haider. Are we seeing a twist in the tail? A fired-up delivery, an arm ball down the leg side. Well, he got across a little bit, Zamir Haider, and swept this, flicked this. You can call it what you want. And got it over square leg for half a dozen. 3 balls, 3 sixes. 95 needed from 27. Let me tell you, after 5.3 overs, well, they were, the Berlin CC were 89 for no loss. So the gap is constant. 23. Can they make the most of this over now? Yes, and will he continue the streak of the sixes? We'll have to wait and watch. No, he wouldn't. He would go back to the pavilion. A very, very good start for him in this over, but I think the energy and the, I would say the whatever was happening is just went into him, and he couldn't look at the ball and couldn't time the ball. Zamir Ahmed and lost Zamir Haider, and he lost his wicket out there. He was trying to change the fate for the Victoria's team, but at this point he could only be unhappy. And a very good catch there by the fielder out there, and the fielder who was at the short third region did no mistakes whatsoever. The ball was quite so high above, and he did take it quite safely and quite calmly, as this wicket was required, or else the match might have turned around. It was Imran Bukhari who made no mistakes, and a wicket gone. It is fourth one down. Is 66 for 4 for the Victoria team now. What an over it was. 6-6-6 and then a wicket. Jatinder Vashisht will definitely have his last laugh, and Zamir Ahmed wouldn't be happy. 30 of 10. If the match would have been in a better position for the Victoria team, I would have said it is a great cameo, but he needed a responsible innings to be played by Zamir Haider. He didn't do that, so I would say a chance that has been failed here. A better ball, the new batter arriving is Zafar Mohammed, and now what can Victoria do from here? They definitely would be wanting to add up more runs, but they will be adding more wickets column to their scoreboard as the new batter gets out on a duck here. A very good stumping by the keeper, and keeper is doing a brilliant job. Before that, a good catch, then a very good stumping by him, and it is the man who is going back to the crease of Zafar Mohammed with just a 0 on his column, and that will be the end of the over. It is 66 for 5. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches.
From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Small ray of hope then in the form of Zamir Haider. It was for FC Victoria 89 when he struck 3 sixes on the trot. We did feel that he was trying to make something out of nothing in this game, but then after those 3 sixes, what followed next was 3 dot balls which had 2 wickets. However, the 7th over has seen a 6 now. Karan Singh is the new bowler, and Shahid Ali, who's a new batter, has started his innings with a bang. He scored a 6 on the very first ball that he has faced. 73 for 5 in 6.2 overs. If you look at the equation in separate, it's looking almost next to impossible because 88 needed from 22. Every ball you need 4 runs. But if you compare those two teams at this rate, well, the ball and CC were 100 for 1 in 6.2 overs. That means 34 runs ahead. However, if the Victoria team can just try and runs and over, they're not going to win if they score 20 runs and over, but at least they can get chasing 176 against the other bowling team, that is the ICA bowling team. They don't want a repeat of that. They might end up losing this game as well. They can, but they can try and make that loss look a bit more respectable. Swept away towards deep mid wicket, a single then, 74 for 5, 87 more needed from 21 balls. Yes, and at this point, when you are playing in a table tournament or you are at the 10th position, some net run rate would be really important, as the worst net run rate in this tournament for any team is by the Victoria's team. It is minus 4.357, and if these guys lose at this point, which doesn't, if these guys lose with this margin as they are currently looking at, as one more wicket falls down, good catch there by the fielder who is standing at the covers region, and one more wicket falls up, it is going to be the 6th man down for the Victoria team, and I think the net run rate might dwindle even more. They would be wanting to get as much runs as possible on the boards, but I think that situation is more than it is more towards the impossible mark now, as the 6th man goes down. It is Hassan Abbas who goes, and it is Sahil Lal who takes a very brilliant catch, and Karan Singh gets his first wicket. So now 7th overs, 2 more deliveries remaining, and 74 for 6 is up. How much more can the Victoria team get? At least get to the triple digit mark, and that would be their aim, at least get to 120, so they have some respectable total put up, but we'll have to wait and see. As this time the new batter arriving, Usman Arif, just pushes the ball, takes a single and gets off the mark. One more delivery remaining of Karan Singh, who started off with by conceding a sixer, has in the end gotten a wicket and is bowling quite so well this time. Again outside the off, will it be a 6? Will it be a 6? No, it will. I think it would be a 6, as the catch dropped there by Aves has ricocheted towards the boundary. No, it would be a boundary. It would be a 4 runs, but he is not happy. It was a catch towards the mid-wicket region, but dropped nevertheless. 79 is on the board. It is 79 for 6 after 7th over. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches.
From international showdowns to heart. 7 overs done in 79 for 6 are Victoria almost at a hopeless case now. 82 needed from 3 overs, and we are seeing more spin, and this could be another wicket as well. It is a googly from Hassan. It is Mohammad Hassan. Very first ball, Usman Arif goes to play the slog sweep, gets a top edge, and actually it's not even a googly, it's a leg spinner. If people have seen how does Peter Hatzoglu bowl, he is bowling exactly the same way. Peter Hatzoglu, who plays for the Melbourne Renegades or Perth Scorchers in the Big Bash League, and now he's trading his talent to different parts of the world. He is similar. He has a similar kind of an action to Peter Hatzoglu, and now wicket number 7 has fallen, and it's a sad state for FC Victoria. I don't think they are going to be victorious at all. And Usman Arif comes and goes for 1 run from 2 balls. A decent catch by Ishan Aditya, who is the wicket keeper. Awaiting who will be the next. Yes, Haider Ali is the new man in for the Victoria team. And as Shaurya mentioned, I think forget the 82 runs now. What they need to do is for 2 things they need to do. First, try and play out their 3 overs. So 3 overs, roughly 3 overs. That's 17 balls. In 17 balls, at least try and get to 100, 110. Try and score 2 runs per ball and at least put in a competitive effort. Because remember, they have lost 1 game by 93 runs. And here, they would obviously lose by 93 runs, but they might end up losing by 60, 70 runs. And in a T10 game, losing by that amount of a margin, it's a very, very big thing to happen. Short ball down the leg side, it's pulled away towards fine leg. There is no fielder there, and short third himself goes across to his left to try and stop the ball. Just a single though, 80 for 7, 81 more needed from 15 deliveries. Yes, and at this point, 100 would be the aim of these two batters, Shahid Ali and Haider Ali. They both would be wanting to get those scores. This time, Shahid Ali tries to clear the long on region, but he would be only clearing his walk as he is going back to the pavilion. It will be the 8th man down, and the situation from bad to worse to now terrible for the Victoria team, as they have lost another wicket, and I think the triple digit mark also, and playing the remaining overs also would be in jeopardy, as the batters are just giving away their wickets, and the inner circle or the inside circle was also not being able to clear by the batter. And now 8 man down, 80 for 8 is the score for the Victoria team. New batter who will be arriving will have to wait, but would be giving the catch would be a great one. It is Abhilash Annatharam who gets that brilliant catch, and it would be Bilal Hussain who comes up to bat here, and good delivery by Mohammad Hassan, a faster one outside the off, and it didn't spun quite well. I think it was an arm ball, and just a dot it would be. Last ball of the over, 80 for 8 on the scoreboard, and this time it has again hit towards the mid-wicket region, and a brilliant catch there by the fielder. I think he has hurt himself in the process, but it was Aves who went to get that catch, and he did catch it quite well. He dropped a catch before this one, so he did take his redemption, but I think he has hurt a bit. I hope that it would be anything serious and he would be able to play after just putting on a spray or anything. But the 9th man down, it is 80 for 9 after 8 overs for the Victoria side. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Spectacular over, and I think the match is over now. It was a spectacular over on the previous one by Mohammad Hassan,
3 wickets and just 1 run from it. And the next ball, well, Karan Singh comes on to ball. The first ball, it was short and it was cut away. Actually went on the outside, it's towards short third. And now Haider Ali started to run and then himself started to go back. Ehsan Latif, poor chap, started running from the non-strikers end, and halfway through, he saw Haider Ali was not even looking at him and he started running back. An easy run out at the bowler's end. So, end of the debacle then, they are not even finished. And it's a diamond duck for Ehsan Latif because he has not even faced a ball. He's run out without even facing a ball. And I would say a torture is the right word for the Victoria to end. They have been bowled out for 80. So in the previous match, they at least made 83. This time, they have not even crossed at 83. But the margin of defeat has come down. If you want to take some positive, but a loss by 80 runs is a massive, massive thing. And as expected, when a team gets bowled out for 80, you don't see much contribution. Just 3 batters entered double figures, of them top scoring Zamir Haider, who tried to inject some life into the match. 30 from 10. Kumar Lakshman Das at the start, 18 from 9, and Shahid Ali in the middle, 11 from 4. But other than that, it was a telephone directory. Zishan Sahi, the captain, 5. Hassan Abbas, 8. Zafar Mohammed, duck, 2-ball duck. Usman Arif, 1. Haider Ali, 1. Bilal Hussain, duck, and towards the end, Ehsan Latif run out for a duck as well. And in terms of the bowling, well, surely you must be finding a lot of positives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bowlers used by the Berlin side. Yes, and if we talk about someone who did a brilliant job, it was Mohammad Hassan, who got 3 wickets for just a single run in 1 over. So brilliant job by him. If we talk about the other bowlers, it was Awais Zafar, who bowled in 1 over, 7 runs for a wicket. Imran Bukhari, 1 over, 8 runs for no wickets, but a good over by him. Saddam Gill, 2 overs, 21 runs and a wicket. Sahil Lal, 1 over, 11 runs and a wicket. Jitendra Bashist, 1 over, 18 runs and 2 wickets. Karan Singh, 1.1 over, and he was bowling the last this 9th over and 13 runs for a wicket. And Mohammad Hassan, a brilliant job, 1 over, 1 run and 3 wickets. Very, very brilliant job by him. And if we talk about the batting of the bowling side, it was Sagar Kataria, 69 of 28, 5 fours and 6 sixes. A brilliant job between him and Neeraj Patwari, 43 of 18 for Neeraj, 5 fours and 3 sixes. Jitendra Bashist, 5 for 3. But after that, a brilliant cameo by Sahil Lal, 28 of just 9, 2 fours and 3 sixes, and Awais Zafar, 7 of 4. So that was the batting. And bowling of Victoria, not quite so well. 2 overs 33 for Ehsan Latif. Kumar Lakshman Das, 2 overs 35 for 1. Hassan Abbas, 2 overs 35 for no wickets. Zishan Shahid, the captain, 2 overs 25 for 1. And Haider Ali, 2 overs 28 for 1. So that was it for the match number 1. And it is the Berlin team who gets the victory, and they win this game with quite a lot of margin. It would be 81 runs, and a brilliant victory for them to, I think, boost up in the points table here. Absolutely, a massive victory for the Berlin side. Just that tonic that they needed to jump from the bottom to the middle half. But a disappointing match, to say the least, because it was a totally one-sided match. Probably, if Victoria had fielded well, taken their chances, maybe Berlin could have been restricted to 130 or 120. I'm not saying that they would have chased on 120, but at least they would have made a better fist of it. But never mind. I mean, it may be a bad day. You learn from your mistakes. And going forward, we wish Victoria all the luck to bounce back from these back-to-back losses. And as far as Berlin is concerned, we wish them luck for better performances in the coming days. So that's it from the pair of us. That's Karthik and Shaurya. For now, we are taking, we can say, a short break, because in an hour's time, we'll be back with a big one. That's Ireland versus India for a 3 T20I series. Jasprit Bumrah is the captain, and we certainly hope that we have a good game on our hands over there. But the action at Crickong is not done. In fact, our colleagues Dhanush and Deepesh are covering the Maharaja T20 trophy right now, where rain has put a stop to the proceedings, put a halt to the proceedings, but we believe that it's not going to be a long delay. You can tune into that channel, but do remember that we shall be back at roughly around 7:20 p.m. for the first T20I between Ireland and India. Do join us then on that channel. Until then, please do take a break, and please do allow us to take a break as well. Bye-bye. Take care.
Thank you for tuning in. This is your commentary team signing off. Catch you next time with more exciting live match.